Hello and welcome. Very, very good evening to all of you. Right. I'm sure each one of you is excited about the way market is behaving, the way our market has been very resilient, right? And I'm sure some of you might have been having a feeling of missing out because the opportunity was there when the market went down to 16,000, even to 15,300, 400, right? And many of you would have been following the market with me regularly. I'm sure you would have taken a good number of positions, fundamentally strong companies, and by now you would be in handsome profit, right? So that's what I'm expecting from all of you. So let's look at the journey market has covered so far. When I say the market, I'm talking about Nifty index, parallelly Sensex, right? That's BSE index of 30 stocks because they move hand in hand. But mostly I trade as well as invest in NSE, National Stock Exchange. So I'll be referring to market as Nifty 50 index. And of course, parallelly, we always look at Bank Nifty as well. Both are the indices. They both, like Nifty represents 50 stocks of 50 corporate entities with certain criteria, with certain market cap, free float and all. Apart from that, Bank Nifty index includes 12 banks, right? And most of these banks are already in Nifty 50 stocks, right? Of course, we have Nifty Financial Services, another index which has been traded and as well as having its weekly options. But as of now, we are not referring to that here, right? So last week हमने बात किया था, we were somewhere, Nifty was trading at what 18,170, right? Now Nifty Friday closed at 18,350. So that's the journey so far Nifty has covered. And of course, Nifty had, last high of Nifty all-time high was 18,604. So Nifty is just 254 points away from all-time high, roughly 1.4% you can say. Similarly, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो let me share the charts with you so that you can relate to what I'm saying, right? So now let me share it this way, right? So you could see that the Bank Nifty has already broken its previous high. So Bank Nifty is already trading in all-time high. Previous high of Bank Nifty was somewhere around 41,840, right? Now Bank Nifty is trading at 42,137, which is roughly 297 point away from the previous all-time. So Bank Nifty में अच्छा breakout हो गया. And if you've been listening to the running commentary, which I've been having for last more than a year now, that the banks will be the one where upside will be much more. Of course, this time Nifty and Bank Nifty did not move upside or downside hand in hand. थोड़ा सा वेरिएशन रहा, कभी निफ्टी स्ट्रॉन्ग था तो बैंक निफ्टी वीक पड़ रहा था, एंड कभी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था तो निफ्टी वीक पड़ रहा था. As of now, also the same thing happening. Bank Nifty is stronger than Nifty, right? Bank Nifty ने अभी all time high touch भी नहीं किया, while as Bank Nifty ने already अपना all time high breakout भी दे दिया है. So that's what is happening on the technical front in charts, right? Now, अगर हम before we get into the your questions or technical analysis, let's look at what's been really happening on macro and micro fronts, right? That's very crucial to understand the market in a complete manner, right? The overall क्या चल रहा है मार्केट में वो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, right? So हर सैटरडे हम ये बात करते हैं कि टैक्सेस का क्या कलेक्शन है, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन हो, 1.52 करोड़ है अक्टूबर का जो डेटा है, दैट्स अगेन लास्ट 14-15 मंथ से 1 लाख करोड़ के ऊपर चल रहा है. That's excellent revenue government is having. Obviously, the revenue comes only when the businesses are doing well and the collections are happening
better, right? Sales is happening better than before, better than previous month. एडवांस कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो हमारा Q2 का एडवांस कॉर्पोरेट टैक्स 1.49 लाख करोड़ था, which is again a record high, 17% higher than previous year. Similarly, gross डायरेक्ट टैक्स की बात करें जिसमें कि आपका कितना था 8.98 crore, right? Again, that is also a much higher figure. Previous month that was 8.36 lakh. एंड अगर आप कंपेरेबल लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इसका कंपैरिजन करेंगे तो सेम पीरियड में उस कंपैरिजन के बदले में दिस इज ऑलरेडी अप 23.7% हाई. Q3 के results have come already, like Q2 results, sorry, not Q3 तो भी चालू हुआ है, right? So Q3 के results अच्छे हैं. Great results of our corporate houses, except of course IT, which had issues of margin, right? Employees cost बढ़ गई, besides overseas businesses कम हुए, but उसके अलावा बाकी के जो companies हैं, most of them have given good results. So that is again a positive for our stock market. Of course economic growth है. Apart from that, अगर आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की इंडेक्स देखें, या सीमेंट का कंजम्पशन देखें, या स्टील का कंजम्पशन देखें, ऑटो का प्रोडक्शन देखें, तो ये पैरामीटर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में क्या कंजम्पशन हो रहा है वो दिखाते हैं. अगर ये कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो मतलब फैक्ट्रियां ज्यादा चल रही, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सेल्स ज्यादा हो रही. प्रोडक्शन तभी ज्यादा होगा जब सेल हो रही होगी. सो दैट डेटा इज वेरी एनकरेजिंग, मंथ आफ्टर मंथ बढ़ रहा है. So that's one good aspect of it. अगर SGX निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स तो 18,488 पे क्लोज हुई. मैं बात कर रहा हूँ SGX निफ्टी के फ्यूचर की, राइट? करंट मंथ का जो भी फ्यूचर होता है. So that is roughly 30-40 points away from our Nifty future, right? हमारे जो NSE में निफ्टी ट्रेड हो रहा है, that has been trading at what price? कितना था? I think 18,530 या 31 था. So मंडी की ओपनिंग पॉसिबली आपको फ्लैट टू मे बी 20-30 पॉइंट नीचे मिलेगी. एंड अगर गैप डाउन किसी कारण से मिलता है तो यू वुड सी दैट बाइंग इंटरेस्ट विल डेवलप देयर एंड पीपल विल स्टार्ट बाइंग. तो अपसाइड आएगी उसकी वजह से. इंटरनेशनल मार्केट्स भी फ्राइडे को अच्छे से क्लोज हुए, राइट? नाउ अगर बात करें हम क्रूड ऑयल की फ्रेंड्स, ब्रेंट क्रूड ऑयल की $95.87 पे चल रहा है, विच इज अगेन हमने $120 में भी देखा है, अफोर्डेबल है. बट most importantly, at what price we are buying crude oil from Russia is very important. That is not $95. ये तो global future trade हो रहा है ये price पे, right? तो वो हिसाब से for us, crude oil की prices of course महंगी तो है, but still because of great ties between Russia and India, अच्छे price पे available है हमारे पास में, right? Gold की price of course slowly rise हो रही है, राइट? एंड अगर हम इंडेक्स की अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो इट हैज क्लोज्ड क्लोज टू 15, इनफैक्ट 14.3 में क्लोज हुआ, व्हिच माइट बी लोएस्ट इन लास्ट 1 ईयर. सो हमने काफी अराउंड 30 से नीचे आते हुए देखा इंडिया विक्स को भी. मार्केट में जो स्ट्रेंथ बन रही है उसकी वजह से फियर कम हो रहा है. इंडिया विक्स इज नथिंग बट अ फियर गेज. तो एक अच्छा माहौल बन रहा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का. दैट्स व्हाई द इंडिया विक्स इज फॉलिंग वीक आफ्टर वीक, राइट? निफ्टी का पी इज अराउंड 21 प्लस, व्हिच इज अगेन स्टिल अफोर्डेबल है, राइट? इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव येट. बैंक निफ्टी, PSU बैंक, इनफैक्ट all the sectors including realty, infra, metal, FMCG, energy, CPSC, PSC, ये सारे 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. दैट मींस द लॉन्ग टर्म आल्सो दे ऑल आर बुलिश नाउ, एक्सेप्ट IT, pharma and media. These indices are trading between 100 days moving average and 200 days exponential moving average. That means strength बन रही है. इनफैक्ट IT ने तो फ्राइडे को अच्छा खासा अपसाइड दिखाया था. IT इंडेक्स ओपन गैप अप. फार्मा एंड मीडिया में भी अगर पावर आएगी तो then you can see that all of our sectorial indices would also be giving further fuel to Nifty upside, right? So that's good part of it.
US markets now seem to be bullish. उसके भी कई कारण हैं. तो फ्राइडे को बुलिश रहे. Nasdaq, S&P 500 both were above than 200 days moving average, right? In fact, अगर आप Dow Jones देखें, निकाय देखें, FTSE देखें, CAC या DAX, they are also trading above. Let me correct it this way, okay? थोड़ा जंबल हो गया. So Dow Jones, निकाय, CAC France, DAX, they are trading above 200 days moving average. While S&P 500 is trading between 100 and 200 days moving average. That means it's on the verge of breakout or trying to break out 200 days moving average, which will make it long term bullish. अगर कोई इंडेक्स ग्लोबली पिटा है तो वो है Nasdaq, which is still trading below 100 days moving average. अभी Nasdaq मोस्टली टेक कंपनीज का इंडेक्स है, राइट? सो 100 कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है और ड्यू टू द फियर ऑफ ग्लोबल रिसेशन, अमेरिका में ऑलरेडी आपको पता है इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है. ऑफ कोर्स मंथ बाय मंथ थोड़ा कम हो रहा है, बट स्टिल इट इज मोर देन 2 times ऑफ व्हाट इट यूजुअली टू बी, राइट? तो वो एक फियर था कि कंपनीज में जॉब जाएंगी. तो टेक सेक्टर Nasdaq 100 was not doing well and still it is struggling. Again, worries have not gone away. Russian Ukrainian war चालू ही है, वो खत्म नहीं हुआ है. There are third party interventions and थोड़े sanction मजबूरी में waive off करने पड़ रहे यूरोप को रशिया से, वो चल रहा है. Now but market has discounted this aspect of it, but the price hike or the inflation due to this situation is still very, very high in Europe, and that's what is a matter of concern for the markets. Now, last week, in fact, this week only, we got a inflation data from US. That was very encouraging, right? So 7.7% का inflation आया यहाँ पे. Now, कैसे inflation calculate होता है कि ये 12 महीने का कैलकुलेशन होता है. तो जो अक्टूबर एंड में कैलकुलेशन हुई है, ये उसके हिसाब से आया है 12 महीने का साल का इन्फ्लेशन का 7.7% के हिसाब से, राइट? विच इज लेस देन 8.2 ऑफ प्रीवियस मंथ, मतलब सितंबर एंड का डेटा था. अभी लॉन्ग टाइम इन्फ्लेशन इनफैक्ट इन यूएस इज अराउंड 3.7%. तो उसके हिसाब से तो ये डबल से ज्यादा ही है, राइट? तो that is again a matter of concern. But अगर देखें ये this time inflation is better than the expected, right? जब हम expected की बात करते हैं तो ये expectancy किसकी होती, कौन expect कर रहा है? ये media houses, brokers, right? Rating agencies, उनकी expectation होती है. तो because at the end of the day market को media ही हिला रहा है, right? गलत सही जैसे भी हो, whatever news they spread, based upon that you would see the market moves in a short term. They create fear or greed. So inflation का data अच्छा था. That's where we saw Thursday and Friday US markets saw like 7%, 4% ऐसे jump कर रहा था. It was very volatile with a positive bias. US का GDP data भी हमको ये week में मिला, and this time the US GDP has expanded by 2.6%. अभी हमने देखा कि 2-3 क्वार्टर्स में इनफैक्ट इट कॉन्ट्रैक्टेड, राइट? पिछले महीने में आई थिंक इट वाज 1.6% का श्रिंक, 0.06% का श्रिंकेज था. उससे पहले मंथ में 1.6% का श्रिंकेज था. और एक्सपेक्टेशन थी ये क्वार्टर में जीडीपी विल बी 2.1%, राइट? एक्सपेंशन होएगा बट 2.1% से. नाउ 2.6% से एक्सपेंशन मतलब 0.5% से एक्सपेंशन ज्यादा हुआ, राइट? मतलब इकोनॉमी ग्रो ज्यादा हुई यहाँ पे. तो उसका डेफिनेटली एक ग्लोबल मार्केट में या अमेरिकन मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट आया. तो उसने हमारे बढ़ते हुए मार्केट में डेफिनेटली फ्यूल का काम किया. सो दैट्स अ गुड न्यूज दैट द मार्केट्स आर लुकिंग now more bullish. Of course, expectation in future are better in term of reduction in inflation as well as incremental
increases in the GDP growth of US. So that's one aspect of course, Federal Bank ने नवंबर में 75 basic points से interest rate hike किया. Now it is at 4%, right? After a long period of time, 4% का interest rate चल रहा है US में. Federal Bank का कहना था कि भाई quarter year FY22 they want to make it 4.4, but ऐसा लगता है कि अभी जो दिसंबर में एक और हाइक होगा, it might go 4.5 के आसपास में. Federal Bank wanted 4.6 by the end of 2023, but it seems अगर इस हिसाब से चलेगा तो शायद उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 23 के एंड तक. But looking at the improving data of inflation and GDP, maybe 0.5 ना हो तो 0.4 या 0.25 का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा US ट्रेजरी में, एंड विच इज गुड न्यूज, राइट? तो फ्यूचर के लिए भी एक एम्यूनेशन हो रहा है. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ग्रोथ कम होएगी, लोन्स कम बटेंगे, प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा. एट द सेम टाइम सप्लाई पैसे की कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी. बट एट द सेम टाइम जब जीडीपी की ग्रोथ स्लो होगी तो देन बैंक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल हैव टू डू द मॉनेटरी ईजिंग. फंड्स को इजीली अवेलेबल कराना होगा इंडस्ट्रीज को, राइट? तो ऐसे केस में इंटरेस्ट रेट कम होंगे. इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम होते जाएंगे, यू वुड सी द मार्केट्स विल बी गोइंग अप. सो दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत बढ़िया सिनेरियो डेवलप हो रहा है. ऐसे में वी शुड बी लुकिंग फॉर मच मोर ब्राइटर movements in indices and growth in our economy as well, right? तो आपके स्टॉक तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट? अभी आरबीआई की मीटिंग है, तो दिसंबर के मंथ में हुई नहीं, नवंबर 3 में एक मीटिंग हुई थी, तो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, ये सडन मीटिंग थी, इसमें कुछ खास एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया, राइट? तो अभी नेक्स्ट हमारी जो है 5th and 6th दिसंबर में मीटिंग है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी अराउंड 0.4 to 0.5 के आसपास में इंटरेस्ट रेट आरबीआई भी बढ़ा देगी, राइट? रेपो रेट बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली आपके बैंक की किस्तें या ईएमआईज महंगी हो जाएंगी. आरबीआई आल्सो वांट्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, राइट? इन्फ्लेशन एज ऑफ नाउ फॉर अस आल्सो इज हायर देन द एक्सपेक्टेड और द गवर्नमेंट गाइडेड इन्फ्लेशन, उससे भी हम ज्यादा में चल रहे हैं, राइट? बट अच्छी चीज है कि आरबीआई की रनिंग कमेंट्री जो है अबाउट the way they will increase the interest rate is still accommodative, right? Now as the market is reaching higher ups, right, जैसे बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तोड़ा तो स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, व्हिच इज एन इंडिसाइसिव कैंडल. मींस व्हाट? बुल्स एंड बेयर्स हैड द सेम स्ट्रेंथ ऑन फ्राइडे. हुआ क्या कि मार्केट काफी ऊपर तक गई थी. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 42,342 तक मार्केट में बैंक निफ्टी ने टच किया था, बट हायर लेवल पे एफआईआईज अभी बाय कर रहे हैं, बट डीआईआईज अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. दैट्स अगेन अ फिनोमेना, राइट? दोनों में से किसी को तो बेचना होगा अगर किसी को खरीदना है तो. सिमिलरली जैसे निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के क्लोज आएगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट होगा और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. और एक ऑब्जर्वेशन की काफी टाइम के बाद में बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी इंडेक्स के जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्विन हुआ करते हैं, एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड, दे बोथ हैव गिवन अ वेरी सॉलिड ब्रेकआउट. 5% 6% के आसपास में अपसाइड हमने फ्राइडे के आसपास में यहाँ पे देखी थी, राइट? So that's how the markets are moving, friends. You need to be, keeping it, you need to be in touch with macros, micros, दूसरे indices में क्या हो रहा है, राइट? दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां क्या हो रहा है, जहां से हम इंपोर्ट करते हैं वहां से क्या हो रहा है. डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो आई थिंक 105 के आसपास में आ गया, हमने 114 तक देखा था. दैट इज अगेन अ गुड न्यूज, राइट? अगर आप
रुपीस की बात करेंगे डॉलर के अगेंस्ट में, तो दैट आल्सो 83 तक पहुंच गया था, नाउ 81 पॉइंट कुछ में चल रहा है एज ऑफ नाउ, राइट? सो all these things are giving a good feeler to the market, right? So yeah, अभी 81.86 में चल रहा है, 83.3 तक हमने डॉलर वर्सेस रुपी को देखा था, राइट? सो दैट इज अगेन अ गुड न्यूज for us, for our market, right? Great. So that was a little about technical, about the indices, global market, nitty-gritties, what more, macros, micros, right, which are impacting the market. With this, we see a very positive vibration in the market, right? For investors, seems to be a good time, right? And of course, for profit bookers also, it's a good time, because if you are sitting on a profit, you need to book part of that profit also. No one has become poorer by booking the profit, right? So those of you who joined late, a warm welcome, a good evening, and let me start taking your questions now, right? So Anup ji, good evening. Pramod ji, good evening. Ansh, good evening. Parthi, good evening. रॉबर्ट कुमार, इनका सवाल है 18,000 पी का मंडे क्या होगा? लेट मी शेयर दिस क्वेश्चन. होल्ड है. सी 18,400 का पी, यू आर ऑलरेडी, यू आर इन द मनी का पी नहीं, ये तो आउट ऑफ मनी का पी हो गया. पी है ना आपका, तो आउट ऑफ मनी का हो गया, राइट? सो देखें, एज ऑफ नाउ निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. अगर although it has given a huge gap, right, almost 290 point का gap था फ्राइडे के टाइम पे. if the market comes to fill up this gap, आपने लिखा नहीं कि कौन सी एक्सपायरी का है. I generally consider a month long expiry. जो मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, जनरली मैं ऑलरेडी नवंबर के पीज और सी से बहुत पहले बाहर हो गया हूँ. आई एम नाउ इन दिसंबर एंड जनवरी, ट्रेडिंग इन दिसंबर एंड जनवरी. सो कभी भी इमीडिएट जो एक्सपायरीज होती है उनका पी या सी न लें, कोशिश करें कि उसको थोड़ा लंबे टाइम का लें. सो अगर आप चार्ट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज मार्केट हैविंग अ बुलिश बायस, बट 18,350 के आसपास में हम करें. 18,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट? रेजिस्टेंसेस काफी है निफ्टी के पास में. सो यू विल हैव, I am of a opinion that the market will have a little bullish bias, but market may open gap down, and then from there they may take upside, right? Exactly. आपका 2 दिन का थीटा लॉस होएगा for sure. उसका प्रीमियम कम हो गया होगा if you are buying, if you have bought the P. I'm option seller, so I don't recommend people to buy options and hold. And holding option after buying is a further difficult task. Right? Okay. सुकृति जी का सवाल है, what is your view on Zydus? ठीक है, let's open Zydus का चार्ट. फार्मा सेक्टर स्टिल कमजोर है सुकृति जी. Zydus का चार्ट देखते हैं. सो फार्मा ने फ्राइडे में, इनफैक्ट इवन थर्सडे में भी बेयरिश था. थर्सडे में यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन साइड हमने नहीं देखी. सबसे बड़ी डाउन साइड थी औरो फार्मा में, विच ड्रैग द फार्मा सेक्टर कंप्लीटली. उनके एक डायरेक्टर के अरेस्ट होने की न्यूज थी, तो वी सॉ ऑलमोस्ट 11% डाउन साइड ऑन औरो फार्मा, एंड द सेक्टर ऑल्सो सफर्ड. Even on Friday, there was a downside in pharma sector, but Zydus में थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है. यहाँ से अच्छा सपोर्ट दिख रहा है मुझे. 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है. मेरे ख्याल से अगर आपको चाहिए है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पे 2050 के टारगेट के लिए. दैट विल बी योर स्विंग ट्रेड, ठीक है. बट उससे पहले एक रेजिस्टेंस आएगा 1840 पे, मतलब 175 पॉइंट के आसपास में. दैट मीन्स 10%.
तो इवन यू गेट अ 10% इन फ्यू डेज टाइम, नॉट अ बैड आइडिया है, राइट? तो ठीक ठाक है। आई एम टर्निंग बुलिश नाउ ऑन फार्मा सेक्टर, काफी पिट चुका है। उसके बाद में हाँ, एक बार जाइडस का फंडामेंटल जरूर देख लें, क्योंकि कई बार अगर फंडामेंटल में ही दम नहीं होएगा तो उसके बाद में वो कंपनी का ऊपर आना डिफिकल्ट होता है, राइट? आरओई एंड आरओसी बहुत अच्छे नहीं है। 33 के प्रीमियम पे, 33 के पी पे ट्रेड कर रही है, राइट? सो लाइबिलिटीज है, पीजी रेशियो हाई है, फ्रेश कैश फ्लो है, कोई इश्यू नहीं, उसका प्लेज नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी, प्रोमोटर्स आर होल्डिंग 65.4%, नॉट बैड, तो इट्स जस्ट 2 times ट्रेड, ठीक ठाक है, मतलब कोई इश्यू नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। इफ यू आर टेकिंग अ स्विंग ट्रेड, साउंड्स टू बी वेरी सेफ। अनूप जैन जी का सवाल है, ल्यूपिन एंड मैक्स हेल्थ केयर। ल्यूपिन के थोड़ा फंडामेंटल्स काफी टाइम से डिटोरेट हो गए। फ्यू इयर्स बैक दे यूज्ड टू बी गुड। लेट मी सी आरओई आरओसी माइनस में चल रहा है इसका, राइट? आरओसी 7 का माइनस में, 7% का माइनस में, ये 11.8% का माइनस में। बुक वैल्यू से तभी भी 2.86 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। पीजी का कोई डेटा नहीं हमारे पास में। सेल्स ग्रोथ 5 साल की -1% है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे। कुल मिला के ल्यूपिन के बारे में माय ओपिनियन इज नॉट वेरी गुड। आई हैव सीन दिस स्टॉक, आई हैव बीन इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, बट नाउअडेज आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट ल्यूपिन। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है? हाँ, टेक्निकल में अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो जब भी फार्मा में अपसाइड दिखेगी आपको, डेफिनेटली यहाँ पे भी एक अपसाइड देखने को मिलेगी ल्यूपिन में, राइट? लेट्स play a Lupin chart and see how it is working. Okay, so Lupin is trading about 200 days moving average, एक अच्छा बुलिश मूव दिखा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से एक 793 के आसपास में देखें, ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो देन यू माइट सी मच हायर साइड, बट ये एक क्रूशियल लेवल है इसका। इफ इट क्रॉसेस यू कैन टेक अ स्मॉल पोजीशन, नो डाउट अबाउट दैट। एंड 785 के आसपास में ऑब्जर्व करें। 785 टूटेगा तो देन इट हैज अ नेक्स्ट टारगेट ऑफ 850 860 के आसपास में। देन नेक्स्ट टारगेट इज 980, बट अगेन यू हैव टू वॉच आउट, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिस विल बी जस्ट अ टेक्निकल बाय। ओके, तो टेक्निकल बाय का मतलब स्विंग ट्रेड है या पोजिशनल ट्रेड है, आपको क्विकली निकलना पड़ेगा। और निफ्टी फार्मा अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते पूरा हफ्ते पिटा है, 5 के 5 दिन, ये भी आपको ध्यान देना। बट इट इज ट्रेडिंग अबाउ 200 डेज मूविंग एवरेज, सो ऐसे बुलिश है। यहाँ से एक बाउंस बैक तो उसको ऊपर आना ही आना है, राइट? दूसरा आपका मैक्स हेल्थ केयर। लेट मी सी मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स का हमको चार्ट लगाना पड़ेगा। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, मैक्स हेल्थ केयर डिवाइसेस, I never thought ये इंस्टीट्यूट है। Okay, let's see whether we get the chart of it. Okay, so that's the chart। 445 पे ट्रेड हो रहा है ये, राइट? बुलिश है एज ऑफ नाउ। सपोर्ट अच्छा है यहाँ पे इसके पास में, ये लेवल पे। इफ यू वांट टू ट्रेड इट, 425 का स्टॉप लॉस लेके इसको आप स्विंग ट्रेड में ले सकते हैं। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं दिख रहा है टेक्निकली। खाली ये यहाँ पे ये लेवल पे थोड़ा वॉच आउट करिए। 464 के आसपास में इसमें सेल आउट हो रहा है और ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। वन, स्टार्ट बाइंग फ्रॉम द लेवल ऑफ 430, मतलब 430 440 के बीच में बाई करें। आपका पहला टारगेट मान के चला 482, क्योंकि थोड़ा बहुत सेल आउट होगा वहां, तो फिर इट विल टेक अ सपोर्ट एट 463 एंड अगेन 463 यू कैन बाय। सो स्टैगर्ड मैनर में स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लें यहाँ पे।
Tell about LIC India. See, LIC India ने हायर प्रीमियम पे IPO निकाला था, तो इट इज करेक्टिंग, अलाउ इट टू करेक्ट कंप्लीटली. बहुत अच्छी वैल्यू नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए LIC में अभी भी. LIC का जो मेन पैसा लगता है ना, वो लगता है आपके इन्वेस्टमेंट में, राइट? तो LIC के इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, वो जरा एक बार आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि LIC में लोग क्यों इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे. तो नहीं दिख रहा मुझे, मैंने शायद उसको सेव भी नहीं किया है. राइट, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बन रही है अभी LIC में. अगर आप फंसे हुए हो तो आप ले सकते हो, थोड़ा एडिशन कर लो. 720 इनफैक्ट 670 के टारगेट के लिए एंड 720 के टारगेट के लिए. फिर वहां पे जाके इसमें शायद वापस से सेल आउट होएगा. ओके, डिविडेंड के नाम पे इन्होंने ₹1.5 रख दिया था पर शेयर का, ठीक है, तो विच इज हार्डली एनीथिंग, द पीनट. Indiabulls हाउसिंग अगेन काफी पिटा हुआ शेयर है. देयर वाज अ टाइम इट यूज्ड टू ट्रेड अबाउट 2000. लॉट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज वर देयर, ऑल्दो नाउ मिस्टर समीर गहलोत इज नो मोर अ प्रमोटर. उनका नाम तो दिख रहा है अगर आप पब्लिक वेबसाइट पे देखोगे तो, but he has already resigned as a director and he has also requested not to be a promoter. So unless until some FII leads the company, तब तक यहाँ पे मतलब स्ट्रेंथ नहीं बनेगी. कंपनी इज इन सेफ हैंड्स, बट थोड़ा सा इफ यू हैव अ व्यू ऑफ 3 to 4 years, then it could be a good investment. Next question is from Malappa. Good evening, Malappa. Balram Chini bought at 410 for long term, 4 to 5 years. So it's the right time to average and relax. Relaxo bought for a long time. Let me see, Mr. Malappa, let me see. Balram. So the chart doesn't seem to be there. No Chini chart, only Indian chart. Okay, let's look at Balrampur Chini. So still in the downtrend, right? स्ट्रेंथ बन रहा है, उसके बाद में वापस से सेल आउट हो जाता है. यहाँ पे 328 में ट्रेड कर रहा है and you bought for 410. Let's see the support levels. So this is a good support level. Right, a good support level is 301. ठीक है, यहाँ से एक बाउंस बैक अच्छा आना चाहिए यहाँ पे, राइट? बिकॉज लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ है, a year back it gave a good run. Now you need to look at बलरामपुर चीनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है क्या? I'm not the one who invests in Chini stocks or sugar stocks, so I don't remember offhand what are the fundamentals. Okay, so 2.44 times of book value, ROC, ROE ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं है. प्रॉफिट 5 years माइनस में चल रहा है. 5 साल का सेल्स ग्रोथ ओनली 7%. 10 year sales growth again 7.7%. Profit in 10 year 101%. I don't know how come this change in the situation. PG in minus. Free cash flow is good. If they are in ethanol business also, so then they might be having a good, money, good profits. They reduce the debt, but fundamentals कोई बहुत strong नहीं है, ठीक ठाक है. Okay. Look at the shareholding patterns. FI is 15%, 18%, public 24%, promoter. ठीक है, good aspect is here FIs, although from 25% they have reduced to 15%,
DIs have increased from 11.6 to 18.2. So the shareholding pattern seems to be good. There's no desperation, right? Now, going back with the fundamental to this chart, at this level, you can definitely take some more uh, and add more once it crosses 370 mark. 370 will be very crucial level. Once it closes above 370 level, you would see the next target would be 443. So that's the time you could be in profit at that point of time. Once the price reaches 440 or so, you can see the fundamentals if there is any improvement, if it is next quarter, right? And look at how the sector is doing, whether you are positive about that sector, whether this company is in a ethanol game. Ethanol is going to be demand of future as a fuel, right? So that could be a good turnaround for it. Now your second target, your second company is Relaxo. Relaxo, quite some time back I was seeing it was very expensive, right? Let me see where it is trading. So it's trading 13 times book value. ROC, RO is just ordinary, right? Return on capital employed is 17.6%. Return on equity is only 13.6%. Now, there is hardly any interest in giving dividend, good dividend, right? If you see even from the perspective of industry P, it's industry P is 54%. It's trading more than 2 times, right? 120 के आसपास में trade कर रहा है. Promoter holding is good, free cash flow is good, but it's a very, very expensive stock. If you see from the fair value perspective, the fair value might be 125, 135. So it's trading at too expensive rates. If you see FIs, DIs, hardly any holding. It's more of a retail traders stock, or maybe some small fund houses might be buying this. So now look at the chart of it, right? Relaxo. Let me see whether you can really relax on Relaxo. 923, a lot of downside still. This level is already broken, right? I would not suggest to average, Relaxo at this point of time. They might be seeing further downside. There is a consistent selling, gap down, then again, market is going all time high and this is going all time low, right? मेरे ख्याल से 52 week low भी तोड़ दिया इसने. 52 week low तोड़े तो that's not the time when you need to really average, right? 52 week means what? 7, 9, 11 months. See, from here it's almost 1 year has been a downside. So मेरे ख्याल से you should wait and watch. It will be average. You should do from 700 level. That should be a better price. मेरे ख्याल से it's very expensive. Malapa, I hope I answered your question. Mr. Parthi का सवाल लेते हैं. ONGC for a long-term investment. ONGC is one of the Navratna companies of Government of India, but due to the oil prices, it had to go through tough time, right? So एक अच्छी चीज 7.5% का डिविडेंड यील्ड है. एटलीस्ट बैंक के बराबर आपको डिविडेंड मिलता है. जितना बैंक इंटरेस्ट देगा उससे ज्यादा डिविडेंड मिलने वाला है. आरओसी आरओई ठीक ठाक है. इट्स मोर देन 17. स्टॉक पी 3.55, फेयर इनफ. 206 की बुक वैल्यू, सो इट्स ट्रेडिंग 0.68 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू. पी के हिसाब से, इंडस्ट्री के पी के हिसाब से भी सस्ता है, कोई इश्यूज नहीं है. एक ही चीज है, सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट में डिक्रीज देयर shares. So obviously, whenever they offload, there will be flood of shares in the market, right? It may go through the bulk deal or whatever way, but whenever there is a supply of shares in the market, the prices will go downside, right? So shareholder के हिसाब से FIs are holding 8 so एक stable holding है यहाँ पे shareholders की, right? So that way there is no issue of holding the price. Let's look at
Where is the what is the technical chart? NGC, right? टेक्निकल चार्ट देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं. बाकी तो डेटा ठीक ठाक लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है, राइट. टेक्निकल चार्ट्स आर शोइंग इट्स बुलिश. एक रेंज में फंसा हुआ है 140 के आसपास में. 140 अगर ये तोड़ता है तो आप पोजीशन बनाना चाहते हैं कि जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रही है ना, ये डाउन ट्रेंड की जो एक लाइन है वो ऑलरेडी इसने तोड़ दी है, राइट. दैट्स अ गुड एस्पेक्ट. सो आइडियली आपको पोजीशन ये लेवल पे बनाना चाहिए था, स्टार्ट करना चाहिए था ये लेवल से, 130 के लेवल से. 140 इज नॉट टू फार ऑफ. मेरे ख्याल से पोजीशन बनाई जा सकती है, स्टैगर्ड मैनर में ले. एज ऑफ नाउ थोड़ा पोजीशन बनाए और उसको ऐड ज्यादा करें वंस इट इज स्टेबल अबव 142 to 145. that will be it going above 200 days moving average, and sustainably it will be going there. So ठीक ठाक stock है, no issues on that, right. नेहा जी का सवाल लेते हैं. L&T Finance is selling off their sum of businesses. I am investing in it, and what is your view on it? True, L&T Finance has sold off 2 of their businesses in last 1 year. It's been doing great. One's, I think I bought at the price of 61 or 62. From there, I saw it moving to 112. I think 110, 112. So 110 was the price where I could get opportunity to exit. But in one of my accounts, is still on hold. I think वहाँ पे 65 के average price पे है ये, right. I've been very closely observing this stock. So they sold their mutual fund business, and one more business, I don't really remember which business was that, but because of that the stock did not perform well. Apart from that, if you also see the running commentary of L&T Finance management, L&T basically is an engineering company, right? So an infrastructure company. Now finance, this is only one company where it's completely out of gear. So the commentary of the management itself is not very positive about L&T Finance. Maybe I think they may plan to exit afterwards. There has been a good up move in L&T Finance recently. I think 80 के ऊपर चल रहा है अभी L&T Finance. तो मेरे ख्याल से अगर आप इसमें 100 के आसपास में अप मूव देखो, इट्स 81.6 पे चल रहा है. I do not know what is your price at which you have bought. So 86 is one exit price. If you are in 10-15% profit, that could be one level where you can exit, or 92-93 के level पे भी आप. As of now, it has turned bullish. तो slowly it might go up, but I would say even 112 तक का exit का wait ना करें, थोड़ा थोड़ा करके exit करते जाएं, बड़ी position ना रखें. Next quarter, whenever their quarterly results come, what commentary their management will give you, and we do not know. And if it goes down, you may not get time even to exit. Otherwise, fundamentally, company is excellent, no issues. L&T group है, so आपका corporate governance का कोई issue नहीं है. It's only the running commentary and their business strategies of L&T which are focused towards IT, technology and infrastructure or construction. Right. Pramod Jain साहब का सवाल, your view on Sona, BLW and FSN NAYKAA for 1 month. सर देखिए, NAYKAA IPO के बाद से ही पिट रहा है, राइट. तो इसके साथ में अपन भी पिटे, जरूरी नहीं है. ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव शेयर, मोर देन 3 times इनकी बुक के वैल्यू के ये अपने बुक वैल्यू से तो आई थिंक 10-15 times है. काफी महंगे में इन्होंने लॉन्च किया था. फॉर रिटेलर आई डोंट एडवाइज टू गेट इनटू दिस स्टॉक, राइट. नाउ सिंस ये गिर रहा था तो मैनेजमेंट एक और स्मार्ट, इनके जो प्रोमोटर हैं बड़े स्मार्ट हैं वो, राइट. उन्होंने स्प्लिट कर दिया था कि जो रिटेल वाले हैं वो समझ जाएं कि अब सस्ता हो गया. सस्ता नहीं हुआ है सर, 6:1 में बढ़ गया, मतलब एक शेयर के 6 हिस्से कर दिए, तो प्राइस 207 दिख रही है.
आई एम नॉट पर्सनली इन फेवर ऑफ दिस स्टॉक। ओके, अभी भी आप इसके फंडामेंटल्स देखोगे तो आपको समझेगा ये कहाँ खड़ा है। See, 43 times of book value. It's just a e-commerce company, right? स्टॉक का पी देखो सर 1340। ये पी पे कोई लेता क्या? फ्री कैश फ्लो माइनस में, मार्केट कैप 59,000 करोड़ की ऑलरेडी पहुंच गई। जिस दिन शेयर प्राइस गिरेगी ये कैप भी नीचे गिर जाएगी। तब जो इसका रियल मार्केट कैप होएगा उसके कंपैरिजन में अगर इसका फ्री कैश फ्लो देखोगे तो आपको तब रियलिटी पता चलेगी इसकी। सो आई एम नॉट रियली। अच्छा, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग्स, प्रोमोटर खुद बेच के निकल रहे हैं। 0.03% प्रोमोटर ने, अभी प्रोमोटर से तो आपको मेरे को ज्यादा जानकारी होती नहीं है, राइट? सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। 5-10 मतलब लिटरली बोलूं तो आपको ये 50 रुपए का शेयर है जो आज 208 में ट्रेड कर रहा है, 4 गुना महंगा ट्रेड कर। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका। सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग में, राइट? ये भी 13 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। हमेशा सबसे पहली चीज है बुक वैल्यू के कितना टाइम्स ट्रेड कर रहा है कोई स्टॉक। ROC ROE क्या है? 20 के ऊपर है, दैट इज गुड एस्पेक्ट। स्टॉक पी एज ऑफ नाउ 77% के आसपास में है, राइट? 77 का पी ये दे रहा है और पी मांग रहा है ये, राइट? इंडस्ट्री का 19 का है, अगेन नॉट अ गुड साइन। 13.6% प्रोमोटर ने अपना शेयर बेचा है। जस्ट वर्कआउट फाइंड आउट किए बल्क डील में गया है, किस कारण से इन्होंने इतना ज्यादा शेयर ऑफलोड किया है, राइट? PEG 1.53, सो ऑलरेडी ये बोल रहा है कि वो 1.5 गुना 2 गुना में ट्रेड कर रहा है। ये महंगा है काफी। अगर आप इसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से भी ये स्टॉक को कैलकुलेट करोगे तो 150-200 के ऊपर का स्टॉक नहीं है। Let's look at your shareholding patterns 53, 11, 24. So DIs ने यहाँ पे पोजीशन बढ़ाई है, FIs ने तो कम की है, पब्लिक ने काफी बढ़ा दी है यहाँ पे पोजीशन। इसका चार्ट देखते हैं तो विल कम टू नो। सो एक्सपेंसिव स्टॉक है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सोना मार्केट ऑल टाइम हाई पे है फ्रेंड्स। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल नाउ when you are investing. You have to really see that the company has to be fundamentally very strong, क्योंकि बुलिश मार्केट में कोई भी ऊपर भागता है, राइट? सो जब एक्सपेंसिव होती है ना कंपनी तो उनका यही हाल होता है, वो गिरती हैं। कारण समझ में नहीं आता है रिटेलर्स को कि क्यों गिर रही है। इट्स इन अ बेरिश फेज, तो यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश न करें। ये लो ऑलरेडी इसने तोड़ दिया है, 1 ईयर लो तो कब का तोड़, मतलब ये जिस जगह पे खड़ा है तो इसका मतलब इन्होंने ऑलरेडी बहुत महंगे में इसका आईपीओ निकाला। देखो मेरे पास डेटा नहीं, मैंने आईपीओ के टाइम पे इसको स्टडी नहीं किया था। जनरली आई डोंट बाय आईपीओस, प्राइमरी मार्केट में मैं रियली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोमोटर्स होते हैं अपने शेयर्स को 2 गुना 3 गुना बेचने में इंटरेस्ट रखते हैं। नो वन इज इंटरेस्टेड इन retailer making money out of their stocks, as simple as that. In fact, even if you would be a promoter, you wouldn't do that. So then why do we expect then the promoter to sell stocks at cheap prices, right? जो FIs हैं, DIs हैं, वो एडवांस में बल्क डील में बहुत पहले ले चुके होते हैं जब उनको कैपिटल की जरूरत पड़ी। तो ऐसे स्टॉक में ना फंसे प्रमोद जी। योर मनी इज वेरी प्रेशियस, संभाल के रखें। Joseph साहब का सवाल है, REC seems to be on support level. Please share with us next support and resistance according to your study. REC is at a very good price of 100 rupees, right? अभी 5 रुपए का बोनस दिया था, 105 में ट्रेड कर रहा था। तो जब भी बोनस देती कंपनी, जितना बोनस दिया उतना रुपए से नीचे चली आती है, राइट? So it's at a good level, 99.9 के। Yeah, this is where it gave 5 rupees bonus. So मेरे ख्याल से अच्छा लेवल है। All moving averages are around. If it goes below 94, 95, then I'll say कि short करें, otherwise long में है। Fundamentally strong company है, अच्छा इनका जो लोन का बुक है, लोन बुक is very strong, right? हाँ, सरकारी कंपनी है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट स्लो होती है। You can take it for the target of 110
To start with, that will give you 10%. Next target should be somewhere around 120, 127 should be your third target. Mail ka sawal, ITC is bullish trend for last almost 15 days. I'm invested in it and profit now. Should I book and wait for some more time? See, at this point of time, when the market is already making all-time high, right? तो आपको प्रॉफिट पूरा बुक नहीं करना चाहिए, थोड़े में बुक चाहिए, 40%, 50%, एंड देन सी कि जब भी 18,600 के आसपास में निफ्टी जाती तो कैसे रिएक्ट करती है. अगर वहां पे वो करेक्शन लेने के मूड में होगी तो यू वुड सी कि जो भी 8-10% का करेक्शन अगर आया तो बाकी के स्टॉक में भी आएगा. However, as of now, the commentary about ITC is bullish. It's already in a very bullish channel. इसको हम ascending channel कहते हैं. Ascending channel में जिस जगह पे खड़ा है ये 356, 360 तक तो ये ऐसे ही चला जाएगा. 360, 365 टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे ये चैनल ऊपर की तरफ बढ़ेगा. When it falls, you might see it's 340 के आसपास में. So 340 में काम कर सकते हैं. एक काम कर सकते हैं 360 के आसपास में थोड़ा प्रॉफिट करें और जैसे ये चैनल के लोअर लेवल पे आए यहाँ पे, which over a period of time might be 50 days moving average, let's say 340, 335 के आसपास में, you can buy more. That way you can trade the channel, right? सोनिया जी का सवाल है, I saw profit screenshot from your corporate account. What is it? And I can invest in and get profit. You can share contact number to know more about it. Sonia ji, you can open a corporate account if you have a limited company or private limited company. So we trade on our corporate account because when you trade on your corporate account, it is profits are as a business income. So it's taxed at the rate of whatever your businesses are, which is roughly 25% if your business is less than 200 crore, right? So as of now, our business is less than 200 crore. Because of that, it's at a lesser tax bracket. So we take in our corporate account only F&O trades because that's the only business which comes as a business income, right? बाकी स्विंग ट्रेड जो होते हैं स्टॉक्स के या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स या शॉर्ट टर्म मिड टर्म प्रॉफिट्स है, वो सब जो प्रॉफिट के जो वेरियस काइंड ऑफ प्रॉफिट के ब्रैकेट्स हैं, टैक्सेशन ब्रैकेट्स, उसी में ट्रेड उसी में होता है. बट एफएनओ की इनकम जो है यहाँ पे हो जाती है. सो यू कैन फॉर नोइंग अबाउट द कॉर्पोरेट अकाउंट्स यू कैन गेट इन टच विद माय कलीग, राइट, ऑन नंबर 8080 940750 और 9321117070. ये नंबर में आप बात कर सकते हैं जानवी मैम से या प्रीति मैडम से. दे विल गाइड यू. अनूप जैन जी आप बोलते हैं थैंक यू यू वेलकम. और अबाउट GSFC एंड ई क्लार्क्स, ओके विल लुक एट दोस क्वेश्चंस. Now, नए पोस्ट ना करें क्वेश्चंस. लेट मी एड्रेस दीज क्वेश्चंस. आई हैव ऑलरेडी गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर. पेंडिंग लिस्ट है लंबी, राइट. और भी एक लिस्ट है जो मैंने वो लिस्ट में से भी शेयर्स नहीं शेयर किए हैं. आपका सवाल ले लेते हैं. GSFC देखते हैं. GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल.
गिव मी मिनट, माइक्रोफोन इन बिटवीन ऑफ हो गया था। रोहित जी, सी कभी भी आई एम कंसिडरिंग लॉन्ग में हो आप, 18,300 का सी होल्ड है, यू माइट बी इन सम प्रॉफिट। 2 दिन का थीटा लॉस आपको हुआ है। प्रीमियम बढ़ने के लिए ये भी जरूरी है कि इंडिया विक्स बढ़े, उसकी वोलेटिलिटी बढ़े, बट वोलेटिलिटी अभी गिर रही है, तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। जैसे ही आप प्रॉफिट में आए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, दैट विल बी बेटर। बिसाइड्स यू नॉट रिटर्न की कौन से एक्सपायरी का आपने ये कॉल लिया हुआ है, राइट? कभी भी कॉल लें, जनरली मैं प्रीफर करता हूं, अगर मुझे बाई करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 महीने आगे का कॉल खरीदूंगा, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगी, कोई बात नहीं। दूसरा, इन द मनी का, अगर मार्केट 18,100 में है तो आई माइट बाय 17,800 17,700, सो दैट उसका डेल्टा ज्यादा हो, थीटा लॉस दूर की एक्सपायरी का हम ऑप्शन लेते हैं तो उसमें थीटा लॉस कम होता है। और दूसरा, इन द मनी ऑप्शन खरीदते हैं तो उसमें डेल्टा ज्यादा होता है। इसके लिए जब भी मार्केट ऊपर जाती है, इसकी प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ती है। महंगा है बट बिजनेस सेंस है, प्रॉफिटेबल होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है श्रुति सिंह का, KNR कंस्ट्रक्शन फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन बाय इट, नो इश्यूज ऑन KNR कंस्ट्रक्शन, 30-35% का अपसाइड मिल सकता है, आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड, दैट्स द डिस्क्लेमर फॉर दिस स्टॉक। ओके, विक्रम का सवाल है, PFC फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, गो अहेड विद PFC फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, जब भी नीचे गिरता है ले लें, 10-12% का डिविडेंड देता है, बिंदास बने रहें अगर आप वहां पे हो। नीलेश जी, गुड इवनिंग, वेलकम। अभिषेक में आप लोगों के बहुत सवाल नए नए आ रहे हैं, 10:06 हो रहा है, मेरा भी वीकेंड है, राइट। तो मैं अभी सवाल एनालिसिस बहुत नहीं करूंगा, वो सवाल जिनमें मैं ऑलरेडी, जिनका आंसर मुझे पता है, फटाक से एनालिसिस किए हुए हैं, वो दे दूंगा मैं आपको। अभिषेक जी का सवाल है, KC इंटरनेशनल, हेवल्स एंड बर्जर पेंट का एनालिसिस हमने लास्ट वीक में किया हुआ है। लास्ट वीक का स्टॉक मार्केट की बात MJ के साथ वापस से सुने अभिषेक जी, आपको पता चल जाएगा। आई थिंक हेवल्स का भी हमने लास्ट वीक में किया था। KEC का मैं एक बार देखता हूँ, राइट। KEC इंटरनेशनल इंफ्रा की कंपनी है, long time back. In fact, many years I've been analyzing these companies. So KEC I found a little more expensive than other infra companies. So I'm invested in L&T and KNR Construction, right? So infra के नाम पे वो मेरे इन्वेस्टमेंट हैं। अभी उसका कारण आपको अगर मैं दिखाऊंगा, KEC, राइट, KEC इंटरनेशनल अगर आप देखोगे, उसके साथ साथ में आपको और भी चीजें इनके कंपैरिजन में आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, यहाँ तो इन्होंने दिया नहीं है कंपैरेटिव बाकी के कंपनीज को इसके साथ में। सी 10,000 मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है, राइट। लार्ज कैप में अगर आप देखोगे, अगर L&T देखोगे तो ब्लू चिप में आ जाती है, 1 लाख करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है उसका, मार्केट कैप है उसका, तो कंपैरेटिव नहीं है वहां पे। बट अगर यहाँ पे आप देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी -40.16% है, सो दैट इज नॉट गुड, राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज मच लेस देन 3.5, जो मिनिमम होना चाहिए उससे काफी कम है। डेट टू इक्विटी देखोगे 1 के ऊपर डेट है, मतलब जो भी मुझे यहाँ पे पैरामीटर देखने होते हैं वो पैरामीटर पे ये खरा नहीं उतरता है। PEG अगर आप देखोगे 15.3, so it's already very expensive and not making good money for its investors. तो इसके कंपैरिजन में आप, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी KNR कंस्ट्रक्शन, क्या KNR कंस्ट्रक्शन देखोगे, इट विल गिव यू मच बेटर पिक्चर। इनके पास में प्रोजेक्ट ज्यादा है, दैट्स व्हाई देयर फ्री कैश फ्लो इज इन माइनस, राइट। और अभी वापस यहाँ पे, अच्छा इसमें ये आएगा नहीं कंपैरिजन में, क्योंकि KNR कंस्ट्रक्शन की मार्केट कैप उतनी नहीं होगी। जब भी हम कंपेयर करते हैं जनरली स्क्रीनर में जो भी सिमिलर साइज के मार्केट कैप होते हैं उनको होता है। अभी यहाँ पे इसका मार्केट कैप उससे थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए वो एक साथ में नहीं आया है यहाँ पे, राइट। तो भी लेने के लिए इन्होंने रेल विकास लिया है, आइडियली उसको लेना चाहिए था, रेल विकास अलग ही बिजनेस में है।
So not very positive about that, right? हेवल का और बर्जर का आप पिछले हफ्ते के कमेंट्री सुने, मैं वही उसी कमेंट्री पे हूँ अभी भी। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट, चमनलाल जी का कमाल तो हमने काफी सालों से देखा, राइट? इट्स एक्सपोर्ट हाउस, बहुत बढ़िया रिटर्न दिए थे इसने, बट एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है वो देखते हैं। आई थिंक 2015-2016 में मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड था एंड वी मेंटेन गुड मनी फ्रॉम दिस स्टॉक। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, स्टॉक भी कम है, कोई इश्यू नहीं है। बुक वैल्यू 87, बुक वैल्यू के आसपास में 1.28 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है, कोई डिविडेंड नहीं देता है। फेयर वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 200 रुपए की फेयर वैल्यू है, इसकी फेयर वैल्यू से हाफ में ट्रेड कर रहा है। इसका नेगेटिव क्या है? फ्री कैश फ्लो माइनस में, राइट? नाउ अमृतसर बेस्ड कंपनी है, बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग, स्पेशली राइस वगैरह। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट जब भी आप प्रोडक्ट करते हो आपको एडवांस में पेमेंट आता है, राइट? और या जब भी आप बिल ऑफ लेडिंग देते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। और जब आप खरीद रहे हो मार्केट से माल तो आपको क्रेडिट मिलता है। एक्सपोर्ट में आपको एडवांस मिलता है, तो फिर ये फ्री कैश फ्लो माइनस में क्यों होना चाहिए 5 साल का? ये मेरा एक सवाल है यहाँ पे। ये समझना जरूरी है आपको, जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं तब तक इश्यू होगा। अब देखो, डेटर डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 55 to 68 days, so that is not a good news for it, right? So we are out of this stock. Let me see, FIs are not there, DIs are not there, it's only public and promoter, दोनों खेल रहे हैं। not very positive about it anymore, ठीक है? अच्छी मई आप अवॉइड करें ये काउंटर को। अमूल्य प्रदान म्हणत आहे, आता बाजार खाली आली तर कोण स्टॉक मध्ये तुम्ही पोझिशन घेणार किंवा वाढवणार आहे? आता मार्केट खाली आली, माझे जे पण पोझिशन आहे त्याच्यामध्येच मला जिथे पण सी जनरली मी काय करतो, एक पर्टिक्युलर अमाउंट एक स्टॉक साठी आहे, लेट्स मला 20 स्टॉक्स आहे माझ्याकडे, ते 20 स्टॉक मध्ये मोर और लेस एव्हरी स्टॉक विल बी हॅव्हिंग 5 लाख रुपीज बजेट. नाउ सम ऑफ द स्टॉक्स, बरेच स्टॉक मध्ये मी ऑल टाइम हायला प्रॉफिट बुक केलं असेल, सपोज करा ती 5 लाखची इन्व्हेस्टमेंट क्वांटिटी जिथे पण 3.5 ला आली असेल किंवा 4 लाखला आली असेल, जसंच मार्केट खाली पडणार ते स्टॉक मी पहिला भरणार, ते स्टॉक मध्ये मी क्वांटिटी पहिला वाढवणार आहे. तुम्ही पण तसा एक सिस्टम बनवू शकता. ह्या माझं सिस्टम आहे, तुम्ही कॉपी पेस्ट करू शकता हा सिस्टमला. फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपनी कधी पण इन्व्हेस्ट करायचं, मग फक्त फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपनीज मध्ये इन्व्हेस्ट करायचं. डू नॉट गो ऑन व्हॉट टीव्ही चॅनल्स आर सेइंग. दुसऱ्यांना ऐकून स्टॉक मध्ये इन्व्हेस्ट नाही करायचं, बिकॉज दे समबडी विल से समथिंग बेस्ड अपॉन सम न्यूज दे वुड हॅव लिसन फ्रॉम हियर अँड देअर. तुम्हाला हे शिकायला लागणार. स्टॉक मार्केट म्हणजे इट्स अ बिझनेस. हा बिझनेस कसं करावं हा तुम्हाला प्रॉपर ट्रेनिंग घेऊन प्रोफेशनली शिकायला लागणार, तरीच तुम्ही प्रॉफिट बनवू शकता इथे. विश यू गुड लक अमूल्य. सो Arka Chatterjee says, Arka, hello Arka. Sonu Setia says, sir, we can take out Nifty 18,400 put after Tuesday. I think, see, don't go in buying and buying off the options, because you will have a theta decay. Sonu, apart from theta decay, you will also have expiry issues, right? नजदीक की एक्सपायरी होगी तो आपको एक वो डर लगाते रहेगा. अगर आप इंडिया विक्स देखोगे 14 के आसपास में आ गया है, तो प्रीमियम कम होंगी. जैसे जैसे इंडिया विक्स गिरेगा प्रीमियम और घटते जाएंगे. अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शन में, ऑप्शन सेल करिए. दैट इज बेटर ऑप्शन, और हेज करके करिए काम. टाटा, आरका टाटा स्टील इज इन गुड पोजीशन. अगर आप 4 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, राइट? वनीता गाला जी का सवाल, व्हाट अबाउट जिंदल
Poly. Jindal Poly is a good stock, Vanita ji. You can take position there. Only thing is at what price you should buy. Jindal Poly. Let me check that and I'll let you know the. So 835 now it's in downtrend as of now. ये एक लेवल हमने मार्क किया था लास्ट टाइम जब भी एनालाइज किया था ये स्टॉक को, और यहाँ से ये लेवल तोड़ के निकला. तो लेट्स सी कि नेक्स्ट लेवल कहाँ होगा. एंड इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा लेवल तोड़ा है. सो मेरे ख्याल से अगर आपको जिंदल पॉली में पोजीशन बनानी है तो मैं आपको पोजीशन देता हूं कि कहां से बाइंग चालू करें आप. 690 टू 700 के बीच में आप बाइंग चालू करें. मेरे ख्याल से ये यहाँ पे और नीचे जाने में इंटरेस्टेड है. दिस स्टॉक इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग अप. ठीक है, हैवी सेलिंग हो रही है यहाँ पे. फंडामेंटली एक बार आप चेक करो कि जिंदल पॉली क्या कुछ चेंजेस आए क्या. फंडामेंटली यूज्ड टू बी अ गुड कंपनी फंडामेंटली. 36 35 नो इश्यूज. सेल्स ग्रोथ माइनस में है, दैट्स अ बिग इश्यू. 3657,000 करोड़ की कंपनी में 1000 करोड़ मतलब मोर देन 30% का तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो आ रहा है. पीजी इज गुड, कंपनी इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, कोई इश्यू नहीं दिख रहा है. इंडस्ट्री भी 15.3 के पी में. देयर समथिंग रॉन्ग गोइंग हियर. क्यों मालूम नहीं, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. अच्छा, अर्निंग्स हैव अनदर इनकम. द प्राइस क्यों गिर रही है उसका कुछ तो कारण होना चाहिए, राइट. डीआईज तो पहले से नहीं थे. एफआईज 2.94% में. तो माल किसने बेचा है. अच्छा ठीक है. सो पब्लिक है जो कि पेशेंस गंवा रही है यहाँ पे. क्योंकि देखो हर बार मैं आपको बोलता हूँ जहां पे सिर्फ प्रोमोटर और पब्लिक हो वो स्टॉक में आप पैसा मत लगाओ, क्योंकि प्राइस को सस्टेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग हैंड का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है. एंड स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर एफआईज एंड डीआईज. एटलीस्ट उनके पास में ना 8-10% तो होना चाहिए. यहाँ पे जब रिटेल वाले का पेशेंस टूटेगा तो खरीदेगा कौन, सवाल ये है. इसके लिए यहाँ पे बाइंग आ ही नहीं रही है. धीरे धीरे रिटेल वाले निकाल रहे हैं. दे आर लूजिंग पेशेंस. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब प्राइस बहुत नीचे गिर जाएगी या तो प्रोमोटर खरीदेगा या फिर कोई डीआई वगैरह आया तो आया. जनरली ऐसे में प्रोमोटर ही खरीदता है और प्रोमोटर फिर हाई प्राइस पे जैसी प्राइस जाती है वो बेचता है. तो स्टे अवे या उस लेवल पे खरीदें जहां पे मैंने आपको प्राइस दिया हुआ. Okay, thank you for your kind words, Abhishek, Anoop, sweet learnings. Thank you. You know, it gives me immense pleasure, or it gives me immense happiness when I share what little I know, what I've learned in last 15-20 years, being in this market and analyzing the companies, making money out of this business of investment and trading. So I also look forward like you to Saturday, so that we can have stock market ki baat MJ ke saath. And in fact, I appreciate the kind of pristine listening you bring forth to this show. Week after week after, it's been now 1.5 years or 2 years. I don't really remember कि कितने टाइम से हम ये शो कर रहे हैं, but it gives me immense pleasure to host this show, answer your questions, to listen to your queries. And maybe sometimes I may be very straightforward that's how I speak, right? So my apologies if any point of time I hurt your sentiments or emotions. My intention is not to do that. But market में एनालाइज करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे कि रादर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि बहुत गंदी परफॉर्मेंस देते हैं. बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो जहां पे कि प्रोमोटर खुद ऑपरेटर के साथ में मिले रहते हैं, राइट. तो जो कि एक रिटेल ट्रेडर को बेवकूफ बनाते हैं और उनसे पैसा बनाते हैं, राइट. तो अपने ही शेयर को वो गिराते हैं बैड न्यूज डाल के. सो दिस चैनल एंड माय endeavor is to ensure that our retail traders are well learned. They understand how this business is being conducted. It's not 100% fair business, because if you look for hundreds of companies,
5,000 के ऊपर बीएसई में लिस्टेड कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट 1600 के ऊपर एनएसई में है। आपको लगता है हर कंपनी का प्रोमोटर एकदम चोखा है? नहीं, दे आर डूइंग देयर ओन गेम, दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, राइट। वो प्रोडक्ट बेच के भी प्रॉफिट कमाते हैं, अपने शेयर को ऊपर लेके जाते हैं, फिर बेचते हैं, वहां पे भी प्रॉफिट कमाते हैं। जब सस्ता हो जाता है वहां पे खरीद लेते हैं। बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ रिच पीपल। Understand this, as you and me as a retail investors or traders have got limited money, limited resources, और बहुत hard earned money होती वो हमारी, तो never ever lose that money based upon the TV channels, information, or based upon some magazine or WhatsApp। आजकल तो WhatsApp में बहुत सारे मैसेज आते हैं। Ensure that you invest in fundamentally strong companies for little longer horizon. Understand there are 4 types of trading strategies here, or investing strategies you can say। Some people do it for a day, some people do for 15-20 days, जिसको हम swing trading बोलते हैं। Some people do it for 100 days, that is what we call is a positional trade, right? Beyond that, of course, is a long term trading। There's ये एक्चुअली ट्रेडिंग ही है, जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं। जैसे ही प्रॉफिट होता है, यू माइट हैव सीन, जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई में जाती है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट 25% 30% स्टॉक में बेच के प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, देन आई वेट विद कैश। जैसे ही मार्केट में 8-10% नीचे आती, फिर वापस से खरीदने का, ये जर्नी में चर्न आउट करते जाओ और वापस से वही शेयर्स को खरीदते जाओ। दैट मींस द गेम व्हाट प्रोमोटर्स आर प्लेइंग इन दिस मार्केट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड मेक योर माइंडसेट दैट वे। जैसे प्राइस गिरेगा हम खरीदेंगे, जैसे प्राइस हाई जाएगा तो we would not be too much greedy, we will sell the stock, right, and make the profits। So thank you very much guys for being part of stock market की बात MJ के साथ। Do subscribe to this YouTube channel and share it with your friends and family members, as that we increase our community and serve everyone in much better way। Good night, have a wonderful weekend, take care of your health as well as wealth, both are important in life, right?